Hello everyone, good afternoon. Welcome all of you to the session. XAT 2023 का second session on decision making. We had done one session before this. This is the second session. So if you have missed the previous session, do watch. In that we had discussed the framework on how to approach decision making questions. Okay, how do you get those questions correct, and what should be the right approach. ओके मतलब एक प्रोसेस रहना चाहिए बिकॉज आई हैड मेंशन इट अर्लियर क्वेश्चंस जो इस सेक्शन में आते हैं दैट्स अ पर्टिकुलर वे दे एक्सपेक्ट अस टू आंसर because whenever I'm giving you a situation or a problem, one paragraph may not be enough always to explain what exactly the problem is, and sometimes the context is limited. So in that situation we have to think in a particular kind of way, exam perspective से नहीं तो every decision उसके sub decisions and all background of that decision and what all other factors are there सब सोच के ही हम decide कर पाते हैं. तो इस क्वेश्चंस में यू विल नॉट गेट मच डेटा एंड ऑल टू डिसाइड, बट जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड से वो देते हैं. टू अंडरस्टैंड दैट you need to solve previous questions. Once you get the hang of it, okay, they want me to think in this way, then this section becomes extremely easy for all of you. Okay, it can be a very scoring area and you will get the questions right because इस section में you will never find it difficult to answer करना हमेशा easy रहेगा. Everyone will have an answer, but whether it is correct or not वो थोड़ा dicey हो सकता है. So let's begin. Welcome all of you once again to the session. Just a brief introduction of my profile. You can attend all my special classes and plus courses by joining me on the Unacademy platform. You can unlock all my special classes for free using this code if you are not yet part of the platform. My profile link is mentioned in the description of the video. So you can join my Unacademy profile and start attending the classes over there. Just before we start, very happy to share this result with you on Academy CAT 2022 toppers. So congratulations to all the toppers. Very good results this time. 75 plus people from an academy have got a 99 plus and 110 people have got a 98 plus, and it's still counting. So I hope these results will motivate you to work even harder and score well in the XAT exam. A lot of people turn it around in the XAT, even if they had done not that so well in the CAT exam. XAT में बहुत अच्छा करते हैं. Every year this happens and you can also do it. Okay, have faith on your preparation, on your abilities. Try and understand and analyze mocks deeply. Okay, you should know what are your strengths, you should know where are you good at, you should know what are your loopholes and shortcomings so that उसको मैं कैसे एग्जाम में हैंडल कर सकूं, and how do I select questions or how do I strategize which section should I solve first so that मेरे अच्छे मार्क्स आए. तो ये सब थोड़ा बैठ के सोचना पड़ता है. Okay, and give mocks and try and analyze where is it going wrong for you, what is going right for you. तब देखना अपने आप स्कोर आएगा. Okay, चलो before we begin, let me repeat the basic frameworks, the key points when you are taking any decision. So before making any decision, first thing that we need to keep in mind is no biasness. Okay, taking all stakeholders into consideration. You must consider everyone. सबके point of view से सोचना चाहिए. Your decisions must be long term. Myopic, short-sighted वो नहीं होना चाहिए. Long term, positive approach in your decisions. And 5 is no extreme actions. Okay, these are the 5 things that you need to keep in mind. So let me name it in this way: no biasness, all stakeholders, long term, positive, and no extreme action. So these 5 points you need to keep in mind. BSEPL. While I'm taking any decision, if I keep all these 5 points, BSEPL, इसको mind में रखना, and automatically you can answer. और कुछ questions हो सकते हैं, मतलब और एक point अगर मैं add करूँ, out of context. Sometimes the problem का solution is completely out of context.
तो ये ऑल दो काफी रेयर है, बट स्टिल कभी कभार आता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर पूरा एक होगा, मतलब कुछ दिया जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आंसर एकदम से रैंडम, मे बी इट इज करेक्ट और नॉट, बट वी आर नॉट एट अ प्लेस टू लाइक जज दैट बिकॉज वी डोंट हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो समटाइम्स ऐसे भी ऑप्शन जो रहते हैं वी कैन इग्नोर दोज डिसीजन। ऑल राइट, so with this let us start. Take a look at this one. First question, try and answer this. Try and read the question, क्या दिया है? Intercontinental business manufacturing was doing a roaring business, बहुत अच्छा business चल रहा था, ठीक है. Demand of the products was high and supply of raw material was abundant. तो डिमांड भी अच्छा है, सप्लाई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट वाज मैन्युफैक्चरिंग 3 products. Some customers bought 2 types of products, some bought only one. The 3 products were Quickie Quick, Run of the Mill, and Maximax. 3 products. Now the 3 products were this. Customers are not complaining loudly also. तो काफी सब कुछ सही जा रहा है कंपनी के लिए. Now Ram, the product manager, was confused. Demand for Quickie Quick was increasing. इसका demand increasing हो रहा था. Raw material suppliers wanted to supply lower quality at cheaper price. It was profitable for the company to increase production. Quality department was not happy with the product. Ram met Rahim, the CEO, who as always wanted higher profits. तो CEO का बस प्रॉफिट से मतलब था, क्वालिटी डिपार्टमेंट हैप्पी नहीं है. अब राम देख रहा है कि सप्लायर्स लो प्राइस में, चीपर प्राइस में लोअर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स देने के लिए राजी हैं. डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है एंड इट इज प्रॉफिटेबल नाउ. अगर जिसका डिमांड हाई है एंड उसका रॉ मटेरियल भी चीपर मिल रहा है, इवन इफ थोड़ा लो क्वालिटी है, डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, तो आई कैन प्रोड्यूस दैट. राम कैन थिंक लाइक दैट, बट द क्वालिटी डिपार्टमेंट इज नॉट हैप्पी. एंड राम जब इस प्रॉब्लम को लेकर राहिम उसका सीईओ के साथ बात किया, राहिम आज ऑलवेज वांटेड हायर प्रॉफिट, सो ही सेड दैट आईबीएम विल सेट अप अ कमिटी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी. तो बोला कि हम एक कमिटी बिठाएंगे एंड उस कमिटी में डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी कैसे डेवलप करना है. तो व्हाट मस्ट बी डन बाय राम? ओनली प्रोड्यूस क्विकी क्विक एज इट गिव्स हाईएस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है, राम कुड डू दिस. Increase the production of Quickie Quick and ask the supplier for better quality raw material. तो यहाँ पे राम आज द प्रोडक्ट मैनेजर, अगर क्विकी क्विक का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है एंड सप्लायर को फिर बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल के लिए बोलेगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. तो दिस इज समथिंग ही कैन नॉट डू. मेंटेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्विकी क्विक एंड आस्क द सप्लायर फॉर बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल. तो राम अभी ये जो आस्क द सप्लायर फॉर बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल, दिस डिसीजन राम अभी नहीं लेगा बिकॉज ही इज द प्रोडक्ट मैनेजर. ही कन्फ्रंटेड द सीईओ एंड सीईओ बोला कि विल सेट अप अ कमिटी, फिर डिसाइड करेंगे वहां पे कैसे क्वालिटी इंप्रूव करें. तो दैट हैज बीन टोल्ड एंड कमिटी फिर सेटअप होगा, फिर राम खुद से अगर सप्लायर से बात करेगा कि आप ये क्वालिटी का दो या वो क्वालिटी का दो, तो फिर तो प्रॉब्लम है. मे बी द कमिटी विल कम अप विथ न्यू प्राइसिंग और न्यू पैकेजिंग और न्यू वे ऑफ लाइक प्रोमोटिंग द क्विकी क्विक प्रोडक्ट, जहाँ पे कस्टमर माइट रियलाइज कि चलो क्वालिटी थोड़ा कम है बट वी आर इवन गेटिंग इट एट अ लोअर प्राइस. तो दैट इज समथिंग स्ट्रेटेजिक एंड द कंपनी द कमिटी विल डिसाइड दैट. तो राम एक बार बात कर लिया, फिर वो अपने हाथ में फिर जो प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स वो नहीं लेगा. तो इसीलिए बी एंड सी आई कैन इग्नोर. रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्विकी क्विक टिल द कमिटी सबमिट्स इट रिपोर्ट. तो रिड्यूस नहीं करना क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, तो एंड ही हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म द सीईओ, तो वो रिड्यूस करेगा नहीं. टॉप प्रोडक्शन ये तो करेगा ही नहीं. तो ओनली प्रोड्यूस क्विकी क्विक एज इट गिव्स हाईएस्ट प्रॉफिट. तो जितना दिन तक ये कमिटी सेटअप नहीं हो रहा है, तो ही कैन गो विद दिस थिंग. Come to this one.
Any answers to this? What can be the answer to this second question? People attending this live, let me know in the chat section what do you think is the answer of this. Now Rahim set up a brand committee comprising of a few selected managers headed by Robert. The committee proposed that IBM should continue to manufacture the three differently branded products. It also proposed to recruit a new brand manager for improving the brand image of the products. It agreed with Rahim that the company should increase the price. तो रहीम जो कि सीईओ है, तो रहीम बोला कि डिमांड तो बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ाओ। तो ये जो कमिटी है वो रहीम के साथ भी अग्री किया कि चलो एक ब्रांड मैनेजर रखते हैं जो ब्रांड क्वालिटी एंड ब्रांड परसेप्शन इंप्रूव करेंगे मार्केट में, बट वी विल इंक्रीज द प्राइस। Now, Rocket Singh, head of sales, was confused because he realized that customers were mixed with run-of-mill and Maximax. So, what should Rocket Singh do? Rocket Singh launched one more product to increase sales. ये कर नहीं सकता. Rocket Singh is head of sales. He cannot launch a product. वो product manager का काम है. Stop production of Quickie Quick वो भी नहीं कर सकता. वो sales department में है, तो he cannot stop the production also. Launch a campaign on social media to increase awareness about the company's products. वो brand manager का काम है. But maybe he can assist. तो इसको फिलहाल के लिए होल्ड में रखते हैं. Send an anonymous email to all the employees highlighting customer dissatisfaction. तो anonymous क्यों? वो अगर है customers are dissatisfied, so he can come up with that openly. Conduct a research study to find out the reason for customers dissatisfaction. Now this is what he can do, being the head of sales, because sales is the last point of contact with the customers when you are doing a business. Last point of contact is sales. तो sales में ही तुम कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो अबाउट द प्रोडक्ट. How do they like it? What do they not like about the product? What should have been the ideal pricing? What else the customers are expecting? तो ये सारे जो inputs है, they can bring it in. So he can maybe conduct a research and he can find out why are the customers exactly dissatisfied and what can be done, rather than getting indulged in this brand and production thing. He should stick to his domain and try and think क्या वो कर सकता है, कैसे improve हो सकता है, and to do that he has to understand the customer psyche. तो इसीलिए वो सर्वे कर सकता है, which falls directly under the role of a sales guy. head of sales है तो उसके रोल डेफिनेशन अंडर में ये आता है. Now let's take a look at this. Some of the managers in production department were discussing the problem faced in shipping products in time. ठीक है, they were facing problems in shipping products in time. क्या प्रॉब्लम हो रहा था? They complained that they had to undertake responsibility of creating financial and marketing plans in addition to the responsibility of production planning. तो वो complain कर रहे हैं कि हमको production के besides we are also getting financial marketing planning jobs, तो इसीलिए delay हो रहा है shipping of products. At the same time, finance and marketing managers were to be involved in the preparing of production plans. तो वो इंटरट्वाइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को कि तुम अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स भी काम करो, बट उस वजह से क्या हो रहा है, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लेट हो रहा है. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस विल रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स. एज इंटर डिपार्टमेंट का जब डिपेंडेंसी बढ़ेगा तो मार्केटिंग पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंस पीपल आर वर्किंग, व्हाट आर द चैलेंजेस इन देयर डिपार्टमेंट. फाइनेंस पीपल विल अंडरस्टैंड प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस है. तो दैट इज इन अ वे हेल्दी फॉर द कंपनी. तो वो एक्सपेक्ट करके ये सब चीजें करना स्टार्ट हुआ था, बट shipping of the products timely नहीं हो पा रहा. It was rumored that these changes were initiated by the manager educated in US. जो नया मैनेजर आया है उसने ये चेंजेस सब इनिशिएट किया है. Which of the following is the best possible course of action available to the affected managers? अब बाकी लोग जो गुस्सा हो गए उनके लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? Create a union to safeguard their rights. Again, this is something which is not like डिजायरेबल. यूनियन करके राइट्स सेफगार्ड करने का मतलब क्या है? फाइल ए लॉसूट अगेंस्ट द कंपनी. दिस इज टू एक्सट्रीम. क्रिएट अ फोरम फॉर डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज. यस, दिस सीम्स रीजनेबल. दैट तुम पहले डिस्कस करो, लेट योर प्रॉब्लम्स बी नोन टू द कंपनीज मैनेजमेंट एंड देन लेट्स सी व्हाट दे आर डिसाइडिंग.
तो इसीलिए एक हेल्दी मोड ऑफ डिस्कशन एंड चैनल ऑफ डिस्कशन हैज टू बी फॉलोड, ओपन कम्युनिकेशन रहना चाहिए, तभी जाके दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व. Register a complaint, again taking it outside the company doesn't make any sense, so too extreme. Once again, go for further education in US, this is out of context, ridiculous. The only option left is C, that perfectly makes sense. समझ रहे हो किस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है? तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट तुमको देंगे इन 1 or 2 पैराग्राफ, यू रीड दैट, understand what the problem is, and then go for the best like course of action. Not necessarily always course of action, basically depends उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है. Let us think this. I'll wait for a few seconds. All of you read this paragraph once. एक बार पढ़ लो क्वेश्चन है क्या. Take 30 seconds to read. तो ये एक रियल वर्क लाइफ इशू है. यहाँ पे अजय was thinking deeply about a problem that his organization, a business consulting company, faced. क्या प्रॉब्लम है? Now, globalization has affected his company like many other companies. Despite the downturn, the current revenues remained healthy. However, Ajay knew it was inevitable that the company could not do business the same way. तो अजय को ये तो दिख रहा है कि अभी जैसा बिजनेस चल रहा है आगे वैसे एग्जैक्टली बिजनेस चलेगा नहीं. The complexity of managing the business had increased with time. Consultants were under pressure to deliver good and innovative solutions. Consultants were under the pressure to deliver good and innovative solutions. The organization had consultants from different age groups having a good mix of domain and industry expertise. तो कंपनी में अच्छे consultants तो है, different age groups, good mix of industry expertise and knowledge. It was a flat organization with 3 levels. The biggest challenge for Ajay was to have consultants with latest knowledge who would also earn revenues. Getting additional business was a challenge as all the consultants were busy and it was very difficult to hire new consultants. So try and think about the situation of Ajay. Consulting company है, उसके पास consultants है. Globalization में now the economy has opened, the world has opened, so you can get access to a consultant sitting in the United States, or someone being a developer or a coder in let's say Australia or India or anywhere, you can connect instantly. तो वहाँ पे the quality of your solution provided like is under scrutiny anytime. Anyone can check that, and because the world changed too fast, sometimes it will be difficult for professionals to keep up. Let's say I am a technology advisor. ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ या टेक्नोलॉजी एडवाइजर हूँ, एंड आई हैड an industry experience of 15 to 20 years, let us say. But those 15 to 20 years that I worked, and let us say I'm retired now, and then next 5 years after my retirement, whatever technology जो आया होगा, update हुआ होगा, maybe it is 3 times what growth has happened in the last 20 years. Because every time, every year, the significantly technology is changing. Phones, जैसे तो example ले लो, phone change हो गया, computer, laptop, software, everything is rapidly changing. So sometimes it is difficult to keep up. तो इस कंपनी में जो consultants है, they are good, okay, they are good, and they were they have a good profile, good industry exposure, domain knowledge, and different age groups everywhere. That is all fine, but the problem is they are not able to keep it up, and the industry demands that the solutions should be innovative, and they should bring in more revenue. तो ये प्रॉब्लम है. Getting new business is also a challenge, and hiring new consultants is also problem. ओके तो ये अजय का डिलेमा, मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो लेट अस सी इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. Try this, all of you. Let me know your answer in the chat section. People who are attending this, do let me know your answer in the chat section. क्या लग रहा है इसका आंसर क्या आएगा?
some of the consultants, let us see अभी problem statement क्या है. Some of the consultants were adept at applying old solutions to new problems. Okay. Ajay was not very sure that this would work for long. तो वो वही पुराना solution new problems में चिपका रहा है, and they were quite good at it. Some of the clients had complained about the performance of old and reputed consultants. Ajay was mulling over the following 5 solutions. तो उसके पास अभी 5 solution है. पहले है decrease the time spent on client interaction and increase the time spent for generating solution. Can be a possible solution, but altogether time spent को decrease कर दिया तो it will increase your productivity. That doesn't make any sense. Client interaction is crucial. The client को लगेगा कि you are paying them attention, you are trying to understand their problems very minutely and in a detailed manner, and you will deliver good results because you have understood their problem better. तो interaction तो बहुत ही necessary है. So this being the first move is not quite likely. Now increase the support staff to help consultants remain updated. Maybe ये तो needed है. तुम support staff बढ़ाओगे तो उनके पास research करने के लिए time रहेगा and they will stay updated. Decrease the number of simultaneous projects handled by the consultants. Yes, this is also a possible solution. So they can focus better. Make it compulsory for consultants to work on inter-industry and inter-domain problems. So this will help them increase their knowledge and grow and recruit more consultants. तो ये 5 solution है उसके पास. तो अजय को पहले क्या करना चाहिए? First Ajay should go with option, मतलब ये जो option 5 है, this is towards the end, last solution. This should be the last solution. Hire new consultants. तो ऐसे कोई ऑप्शन में जाना चाहिए जहाँ पे ये 5 towards the end है, towards beginning तो नहीं होना चाहिए. तो A, B. So if I go with A, 3 then 2 then 1 then 5 then 4. तो उस and B is 4 3 2 1 5. If you carefully arrange 4 जहाँ पे देखो make it compulsory, तो पहले जो consultants है उनके लिए let's make it compulsory that वो इंटर इंडस्ट्री एंड इंटर डोमेन प्रॉब्लम से मतलब वो लर्न करें. बिकॉज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो कंसल्टेंट्स है, नाउ थिंक दैट यू आर अजय, नीतीश ए आ रहा है, ओके ओके ओके, लेट्स सी. तो इफ यू आर अजय, तो पहले तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे पास कंसल्टेंट्स है, वुड यू लेट देम गो? वुड यू लेट देम गो? जो कंसल्टेंट्स तुम्हारे पास है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में है, वुड यू लेट देम गो? कि मैं अगर रिक्रूट करूं भी जो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट्स है हु हैव इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड डोमेन एक्सपर्टीज, उनको तो नौकरी से निकालेंगे नहीं. बट अजय, यहाँ पे सम क्लाइंट्स हैड कंप्लेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड एंड रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स. तो फर्स्ट थिंग तुम्हें करना क्या है यहाँ पे? उनका नॉलेज बेस बढ़ाना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके, उनका नॉलेज बेस बढ़ाना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज आई विल कीप देम एनीवेज, बट दे हैव टू इम्प्रूव देयर डोमेन नॉलेज एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस डोमेन भी उनका फंक्शनैलिटी बढ़ना चाहिए. तो इसीलिए फर्स्ट आई विल गो विथ ऑप्शन 4 एंड देन ऑप्शन 3. 3 4 कैन बी कंसेक्यूटिव. 3 4 कैन बी कंसेक्यूटिव. यहाँ पे 4 3 की जगह अगर 3 4 भी होता है, इट वुड हैव बीन रॉन्ग. बट आई विल नॉट गो विथ ऑप्शन ए बिकॉज ऑप्शन ए में 4 सबसे लास्ट ऑप्शन है, विच कैनॉट बी द लास्ट ऑप्शन. दिस हैज टू बी इन द बिगिनिंग. तो ये अगर सेकंड में होता है, आई वुड हैव गॉन विथ ऑप्शन ए आल्सो. तो बिकॉज ये लास्ट को है, दैट इज आई विल रिजेक्ट ए एंड गो विथ बी. क्योंकि 4 के इमीडिएट बाद पहले तुम उनको बोलोगे इट इज मैंडेटरी, आप अक्रॉस इंडस्ट्री एंड अक्रॉस डोमेन आप प्रोजेक्ट्स लो so that you learn about other industries and sectors also. So when you give solutions, you will take everything into consideration. Point 1. Point 2, decrease the number of simultaneous projects, okay, handled by the consultants. Then point 3, यहाँ पे आएगा increase the support staff of the consultants to remain updated. Then next, decrease the time spent on client interaction and increase the time spent on generating solutions. Then last को अगर कुछ रहा, फिर आएंगे hiring consultants. So I'll go with option B. Do we have DI sessions? Yes, DI session कल रात को एक हुआ था सिमरन, और भी होगा आगे. QA का सेशन तो होता ही है, डिसीजन मेकिंग का सेशन भी हो रहा है. DI का सेशन 1 session I have done. I'll do 1 more session, DI session. Yes, for that.
ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे 3 4 में से कोई भी फर्स्ट में आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि पहले 3 करेंगे देन 4 करेंगे, या पहले 4 देन 3। आई डिडंट गो विथ ऑप्शन है जस्ट बिकॉज 4 यहाँ पे लास्ट में, 4 कैन नॉट बी द लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट में रिक्रूट मोर कंसल्टेंट्स, वो लास्ट में होना चाहिए। Okay, try this one, all of you. People who are attending this live, do like the session and subscribe to our channel if you haven't yet. Think about what is the answer of this. Let me know in the comment section. इसका आंसर क्या आएगा? Very interesting questions. These are real life problems. तुम रहते अजय के जगह पे तो क्या करते? Think an answer. It's like a carryover. After Ajay implemented some of the steps mentioned above, consultants wanted to renegotiate their contract with the organization. तो अजय ने कुछ वो जो steps यहाँ पे discuss किए उसको implement किया, but अभी consultants they want to renegotiate their contract. Maybe they disagree to it, or maybe they want additional benefits, something like that. It seems that the organization had never mentioned that consultants have to work across industries and domains. तो यहाँ पे थोड़ा lack of flexibility दिख रहा है. फ्लेक्सिबिलिटी एज इन मान लो तुम कंसल्टेंट हो एंड द कंपनी हैड यू बिकॉज तुम एक ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट हो। ओके, ऑपरेशंस डोमेन में यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अक्रॉस वेरियस कंपनीज ऑपरेशन सेक्टर में तुमने काम किया है, तो यू आर एन ऑपरेशंस कंसल्टेंट। बट आई एम ऑल्सो like forcing it to you that you have to work in marketing projects as well, or you have to work in, let's say, some finance related projects. तो या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अक्रॉस डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज तुम्हें काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, एंड इट सीम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैड नेवर मेंशन्ड दैट द कंसल्टेंट्स हैव टू डू दिस. Some of the old consultants were reluctant to change their ways, while many of the younger consultants were willing to follow Ajay's advice. Which of the following decision can be taken by Ajay to handle this situation? तो जो थोड़े old consultants हैं, they are reluctant. Okay, they are not very flexible. ये प्लान अवर्सिव है. ओके, दे डोंट वांट एनीथिंग टू चेंज. बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ बोला नहीं गया था, वी हैव टू वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हम जिस फील्ड में एक्सपर्ट है विल ओनली वर्क ऑन दैट. बट अजय's agenda to improve the quality of the consultants and to make them learn more, so that their delivery of solutions उसका क्वालिटी भी बढ़े एंड कस्टमर्स एंड क्लाइंटेल जो सब होंगे वो उनका वो सेटिस्फाइड रहेंगे. तो अजय अभी क्या करेगा? जो यंगर कंसल्टेंट्स है दे आर विलिंग टू चेंज, दे आर लाइक ओके विद अजय's एडवाइस, बट जो ओल्डर कंसल्टेंट्स है दे आर causing some problems. To retrench old consultants and recruit young consultants. Now this cannot be my first thought of when this kind of problem happens कि चलो कंप्लेन करें निकाल दो उनको, नए रख लेंगे. This is a little too extreme. Okay, not thinking about why they are reacting. So this cannot be my answer. Pressurize the non-conformists by giving preferential treatment to the conformists. Clearly biasness. मैं चाह रहा था वो कंफर्म करे मेरे आइडिया को, जो किया उसको सपोर्ट करूंगा, जो नहीं किया उसको नहीं करूंगा. That's not something that is desirable out of a manager. You'll have to think from all perspective. वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, कैसे किया जा सकता है उनसे काम, and these things. Negotiate with the old consultants and communicate that the new rules would apply to the new consultants only. Again ये भी biasness हो जाएगा, सिर्फ न्यू कंसल्टेंट्स को ये अप्लाई होगा, ओल्ड कंसल्टेंट्स को नहीं होगा, तो तुम पार्शियल ट्रीटमेंट कर रहे हो. डू नथिंग एंड वेट फॉर अ सोल्यूशन टू एमर्ज एज विथ टाइम रेजिस्टेंस टू डाई डाउन. अगेन नहीं हो सकता ये. डिस्कस द इशू इन एन ओपन हाउस एंड लेट सोल्यूशंस एमर्ज डेमोक्रेटिकली. नाउ दिस मेक्स मोर सेंस कि चलो प्रॉब्लम हो रहा है, एक ओपन हाउस डिस्कशन करते हैं, लेट ऑल ऑफ देम रेज देयर इश्यूज एंड कम अप विथ सॉल्यूशंस. लेट मी फर्स्ट हियर टू ऑल ऑफ यू and know that what your problems are and what solution, what kind of solution you are thinking, and then maybe I'll take a decision. Now this is more matured from Ajay's standpoint, that Ajay को ऐसा करना चाहिए. Make sense?
This one is a good question. Try this one. Try this, try this. People attending live, do like the session and write your answer in the comment section. Read this first properly. Okay, क्या बोल रहा है यहाँ पे? Mr. Biswas was to retire in 1 year after serving in the construction department of the Gujarat government for more than 30 years. More than 30 years he has served. After retirement, she wanted, sorry, Mrs. Biswas, she wanted to spend her retired life along with Mr. Biswas, a retired school teacher in a small town in Kerala. They had two children. They both are studying in Bengaluru. The Biswas wished to construct a house in Kerala with their savings. तो उनको एक घर बनाने का मन था हस्बैंड वाइफ को केरला में with their life savings. Now the couple gathered information about owning a house in Kerala. They had four options: buy a fully furnished house from a big developer and furnish it, buy a semi-furnished house from a big developer and furnish it, get a local unregistered contractor to construct a house and then furnish it. लोकल अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को लेंगे एंड वो एक घर बना के उसको फर्निश करेंगे. फोर्थ ऑप्शन इज मिस्टर विश्वास विथ इनपुट्स फ्रॉम द फैमिली कुड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बैक इन केरला by employing the best material engineers, masons and laborers. So these are the four things that they can do. चार ऑप्शन है उनके पास basically. Which option would ensure the best control of quality of construction for Biswas? फर्स्ट ऑप्शन जाएंगे तो क्वालिटी रहेगा नहीं रहेगा, बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा. ओके, एंड देन सेकंड ऑप्शन में बाय ए सेमी फर्निश्ड हाउस. तो सेमी फर्निश्ड के बाद जब तुम फुली फर्निश करोगे वहां पे क्या होगा पता नहीं. थर्ड ऑप्शन वुड एंश्योर द बेस्ट क्वालिटी, गेट द लोकल अनरजिस्टर्ड, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो वी कैन नॉट गारंटी क्वालिटी. फोर्थ ऑप्शन वुड एंश्योर द बेस्ट क्वालिटी. फोर्थ ऑप्शन क्या है? मिस्टर विश्वास जो क्या होगा ना, विथ इनपुट फ्रॉम द फैमिली वुड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन. वो खुद सुपरवाइज करेगा एंड with the support of his family, what he will do is he will employ the best material, best engineers, masons and laborers. तो अगर सारे best लोग काम किया and he is himself supervising, so the work is definitely going to be better. Okay, so I'll go with option D here in this case. Try this one. Read the question and answer this. वही सेम कॉन्टेक्स्ट है. Which of the following additional information, if true, would improve the chances of the third option being preferred? तुम थर्ड ऑप्शन कब प्रेफर करोगे? When will you prefer the third option? Now, based on the current information with no additional information, the third is the best option. तो ये बोलने से तो नहीं होगा. Among local property holders, the contractor in the third option enjoys a reputation. So third option में get a local unregistered contractor and to construct a house and furnish it. तो
ये जो थर्ड बोल रहा है कि अमंग लोकल प्रॉपर्टी होल्डर्स द कॉन्ट्रैक्टर इन द थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन में जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है दैट कॉन्ट्रैक्टर ओज अ गुड रेपुटेशन. Now third one, big developers are less open to changes in design. Doesn't help. Mr. Biswas cannot stay back alone to supervise the construction. So this will not help the option 3 being chosen. The Biswas want to select the furniture on their own. ये भी अगर on their own कर रहे हैं, that doesn't help with the cause of question number 3. Question number 3 I am going with this option B. ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे. नथिंग डिफिकल्ट, मतलब बेसिक सेंस, कॉमन सेंस यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में. यू विल सी इट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉमन सेंस. बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है. यू हैव टू रीड इट वेरी माइन्यूटली, वेरी केयरफुली, तब भी जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा है. यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. All right, try this. Try this. I'll be back in a minute. All right. Yeah. So any answers to this? The Kerala government recently announced a policy in case of a major quality infringement, the builder will pay a penalty of 50% of the price of the house in addition to the price of the house. Okay, price of the house तो देगा और एक penalty 50% देगा to the client within a year of notice. Rank in ascending order of the options that would ensure control of quality. तो मिस्टर बिस्वास के पास बेसिकली 4 ऑप्शन है घर बनाने के लिए. So if the Kerala government has announced this new policy, so what should they do? कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए उनको? Now, in case of major quality infringement, the builder will pay a penalty. तो जब बिल्डर पेनल्टी दे रहा है, दैट मीन्स दे हैव एन ऑप्शन दैट वो खुद बना सकते हैं. ये क्यों गवर्नमेंट ऐसा किया होगा? मे बी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होंगे जहाँ पे बिल्डर को लोग दे रहे होंगे डेवलप करने के लिए एंड दे आर नॉट मेंटेनिंग क्वालिटी. व्हाई एल्स द गवर्नमेंट विल कम अप विद सच अ पॉलिसी? तो जब वो हो रहा है, रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑप्शंस दैट वुड एंश्योर कंट्रोल ऑफ क्वालिटी. सबसे कम कंट्रोल ऑफ क्वालिटी कहाँ पे आएगा? जो अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो रजिस्टर भी नहीं हुआ है, तो उसको कैसे कोई पेनल्टी करेगा? कोई रिकॉर्ड उसका है नहीं, तो ये सबसे कम लाइकली है. तो इसको पहले रखेंगे 3 को. तो 3 कहाँ पे आ रहा है? इनिशियल स्टेजेस में, ऑप्शन सी में. उसके बाद 1 आ रहा है, बाय अ फुल्ली फर्निश्ड हाउस फ्रॉम अ बिग डेवलपर एंड फर्निश इट. अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वो जो बिग डेवलपर है उसको सीधा पेनल्टी एंड ऑल वो कर सकते हैं.
देन सेकंड चीज में भी, सेकंड आई कैन ऑल्सो गो, सेकंड में फिर भी अपना थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। हम सेमी फर्निश खरीदे तो डेवलपर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल अगर कुछ क्वालिटी इंफ्रिजमेंट होता है एंड ऑल। एंड लास्ट को आई विल गो विद दिस 4। अब 4 में तो खुद सुपरवाइज करके कंस्ट्रक्शन करके करोगे तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ लाइक लैक ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग। तो मोस्ट लाइकली दिस लुक्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन। और मे बी डी भी हो सकता है, सी या डी। डी इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज थिंक अबाउट दिस, अगर अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो खराब बनाएगा, हो सकता है वो बहुत अच्छा बनाए। हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि आप खुद सुपरवाइज करके व्हेन आई डू जो वट एवर वर्क वी आर डूइंग बाय सुपरवाइजिंग माई सेल्फ, लेट्स से मिस्टर विश्वास खुद सुपरवाइज कर रहा है, डज इट मीन दैट वो उसका अच्छा काम होगा ही होगा? नॉट नेसेसरीली। हो सकता है वो सुपरवाइज कर तो रहा है, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट स्टिल द वर्क इज नॉट गुड। तो मे बी 4 आगे आ सकता है एंड देन 3 1 2, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे सी एंड डी दोनों काइंड ऑफ आर ऑलमोस्ट सेम टाइप का उनका आएगा, तो इट डिपेंड्स। तो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर इसका क्या था, बट सी एंड डी बोथ कैन बी द आंसर इन दिस केस। ओके, चलो लेट्स टेक a look at this one. All of you read this one पहले, try and read this. Just take a few seconds, read the context, so अपना discussion will be more meaningful. Read the context, and people watching it live, do like the session. A college campus with a population of around 2000, of whom 200 were children, 1200 people between 15 to 45 years, and 500 people between 45 to 60. तो यहाँ पे जो 2000 people है, let us categorize them. 200 were children, 1200 उनका एज है बिटवीन 15 टू 45, एंड 500 है 45 टू 65, एंड अराउंड 100 पीपल आर 65 प्लस। तो दिस इज लाइक द एज डेमोग्राफिक्स वैसे बोल सकते हो। द कैंपस हैज 2 बिग गेट्स ओपनिंग आउट टू द सिटी। There are 400 cars and 500 motorbikes inside the campus. The residents relied on these vehicles to visit the city located 10 kilometers away. Now these are important numbers. एक तो 2 गेट्स हैं एंड वो जब सिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, सिटी इज 10 किलोमीटर्स अवे, इट्स नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस, तो सिग्निफिकेंटली लाइक आउटस्कर्ट्स में है ये। Now, with land within the campus becoming scarce, the chief administrator found the growing demand for parking lot difficult to handle. अब पार्किंग के लिए डिमांड बढ़ रहा है, तो जगह उतना है नहीं, एंड विद इन द कैंपस भी जगह कम पड़ रहा है अभी, तो क्या करें? तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, द फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट्स वांटेड इंक्रीज्ड पार्किंग स्पेस. In the past 6 years, the parking requirement on the campus had doubled. The administrator found it inappropriate to construct parking lots from the students' fee, even though those with vehicles may not complain about it. तो ये स्टूडेंट फी में पार्किंग लॉट बनाना नहीं चाहता, ऑल्दो जो व्हीकल लेके आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो कंप्लेन करेंगे नहीं, बट ही इज नॉट लाइक थिंकिंग दैट इट्स अप्रोप्रिएट। तो अभी प्रॉब्लम इज दैट पार्किंग स्पेस का क्रंच है, scarcity of parking space. So besides creating parking problems, the CA felt that these vehicles added to the pollution and made residents less responsible towards each other. तो इतना गाड़ी एंड ऑल ये हो रहा है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, and residents have become less responsible towards each other. The risk to the children and the elderly because of overspeeding and was menacing. Menacing मतलब kind of very troublesome and worrisome. तो बहुत चिंता का विषय था, वैसे बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग.
and therefore the administration wanted to reduce the number of vehicles in the campus. So uska agenda is number of vehicles should reduce. Now, many faculty members, students and staff members, however, felt that demand for more parking space was natural as vehicles were required to go to the market, railway station, airport and interstate bus terminal all located in the city. तो 10 किलोमीटर तक जाना है तो गाड़ी तो चाहिए सबको. They also told the CA that the elderly, sick and the toddlers relied only on these vehicles. After listening to all stakeholders, the CA wanted to solve these problems while ensuring the campus remained responsible and green. So I hope all of you got the context of the question. क्या problem statement यहाँ पे है and किस way में इसको हमें सोचना चाहिए. So let us take a look at the first question. What do you think is the answer of the first question? Let me know the answer to the first question. Read this and answer. What is the answer to the first one? जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, like the session. If you haven't liked the session, it will reach others. Which of the following actions would best satisfy all the stakeholders within the campus? तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, मतलब सबका डिमांड्स मोर और लेस सही है, जो वो खुद भी सोच रहा है वो भी सही है, तो ही हैज टू क्रिएट अ बैलेंस इन हिज डिसीजन. So how does he do that? Levy extra fee on students to construct additional parking lots inside the campus. Students should pay for upkeep of the campus. ठीक है, but why only students? जबकि faculty and everyone is using, elderly people, toddlers are using, so why only students will pay? So it won't be that fair. Let all the vehicles be parked in a college managed space outside the campus, while 2 battery operated vehicles handle exigencies inside the campus. आना जाना campus के अंदर battery operated vehicles में होगा and सारे cars and all vehicle के बाहर एक college managed space में वो park करेंगे. Kind of looks like a possible solution. Let's see और क्या होगा. Bring all stakeholders to the discussion table. तो इसमें क्या होगा, मतलब this is not a solution. वो तो लाएगा ही सबका प्रॉब्लम समझने के लिए, उसके बाद का सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन. To reduce carbon footprint, only pooled vehicles should be allowed to operate inside the campus. So this is not the solution. Pooled vehicles won't be enough. Pooled vehicles तो है, inside the campus से pooled vehicles करोगे तो फिर बाहर उनका गाड़ी वगैरह वो रखेंगे कहाँ, जाएंगे कैसे? Charge significant fee from any vehicle entering or leaving the campus. This is a little too extreme. So here B looks like a viable option. ठीक है. This looks like a better option. That कॉलेज के बाहर पार्किंग कर लेते हैं, कॉलेज का कैंपस हमको ग्रीन रखना है, तो लेट अस डू दिस थिंग दैट है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल 2-3 चलाएंगे, तो जिनको कॉलेज से बाहर तक जाना है वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में जाएंगे, बाहर फिर उनका गाड़ी रहेगा वहां से ले लेंगे. कॉलेज जो 2 गेट्स है उनके आसपास एक पार्किंग स्पेस ले लेंगे, उनको मैनेज बाय द कॉलेज. तो दैट इज अ गुड ऑप्शन. तो कॉलेज के अंदर गाड़ी का आना जाना कम हो जाएगा एंड जो भी जाएगा वो कॉलेज के बाहर से अपना गाड़ी निकाल के they can travel to the city and all. So this looks like a better option. Correct. B. Correct. What will be the answer to this one? Place yourself in the situation. Place yourself in the situation. You will understand what to do. जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, let me know the answer. Put yourself in the situation. These are quite interesting scenarios जब हम सॉल्व करते हैं, and that is what makes this exam more interesting also. Which of the following would be the best option to increase revenue, decrease carbon footprint and still satisfy all the stakeholders? Make substantial collection from vehicles entering or leaving campus and construct a parking lot outside the campus. ठीक है. Levy extra fee on the students and bill extra. ये students वाला थोड़ा biased हो जा रहा है. Why only students? Bring all stakeholders to the table and let them build consensus.
To reduce the carbon footprint, only pooled vehicles be permitted on the campus. Let all vehicles be parked in a managed space outside the campus, while battery operated vehicles parked at the two gates can be used inside the campus. ठीक है, but revenue कैसे बढ़ेगा इससे? So this sounds like a better option if revenue part is included. तो क्या होगा? सब्सटेंशियल कलेक्शन फ्रॉम व्हीकल्स एंटरिंग एंड लिविंग द कैंपस, टेम्पररीली उनसे कलेक्ट किए, वो पैसा यूज करके हम कॉलेज के बाहर एक पार्किंग फैसिलिटी अच्छे से बनाए एंड उसको अब सब यूज कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू. यहाँ पे रेवेन्यू का कुछ तो है नहीं. ठीक है, ऑल राइट, ट्राई दिस वन नाउ. रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड देखो क्या हो सकता है इसका पॉसिबल आंसर. Kamal Chinnappa, Bimal Rao, Ganesh Krishnan and Dinesh Kumar. So 4 people are there. Kamal, Bimal, Ganesh and Dinesh. They own a saloon each on the Burbill Street. They are the only hairdressers on the street. Each of them offer 3 services. Haircut, shaving and hair dye. And ये सारे सर्विसेज आर, इनका प्राइसिंग इज ₹100 ऑन वीकडेज एंड 115 ऑन वीकेंड्स. ये सबने अग्री किया, मतलब वन इवनिंग ऑल ऑफ देम मेट इन अ नियर बाय टी स्टॉल एंड अग्री टू चार्ज दिस मच. ठीक है, बोले कि इतना हम सब चार्ज करेंगे सेम, तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऑल वर्बली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द अग्रीमेंट. तो सबने वर्बली डिसाइड किया. तो 4 लोग ही हैं, सेम ही काम करते हैं, एक ही स्ट्रीट पे काम करते हैं, तो उनके बीच में एक लाइक टुगेदरनेस में दे केम अप एंड सेड दैट ओके लेट अस डू दिस. नाउ द फॉलोइंग डे कमल बीइंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट, इनमें से कमल इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट स्किल्ड, तो ये चारों में सबसे अच्छा काम कमल करता है. तो इन द लॉन्ग रन पीपल माइट रियलाइज एंड कमल के पास भीड़ ज्यादा हो जाए, बट ही हैज नो एडवांटेज. अगर उसके पास उसका स्किल सेट की वजह से लोग आ रहे हैं, he could have charged a premium, but now because of this verbal agreement he has to charge as much as they are. तो उसका कोई significant फायदा नहीं हो रहा है. तो he was contemplating, मतलब thinking of charging higher than the agreed upon price. तो कमल सोचा था व्हाट इफ मैं थोड़ा agreed upon price से ज्यादा चार्ज करूं, बट naturally that's a dilemma because he has also agreed to them. नहीं करेगा तो एक फिर बैड फेथ, इट्स लाइक ऑपरेटिंग इन बैड फेथ. तो व्हाट शुड कमल डू? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनेबल हिम टू चार्ज मोर विथ मिनिमल वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट? मिनिमल वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट. ओके, तो अग्रीमेंट तो वायलेट होगा ही, बट मिनिमल वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट. तो क्या करेगा? ही विल इंट्रोड्यूस ए न्यू स्पेशलाइज्ड सर्विस एट 130. ही शुड ओपन अनदर शॉप ऑन द सेम स्ट्रीट एंड चार्ज. ये तो फिर कमल अगर और एक शॉप खोल भी लेता है, एक तो खोलना इट्स इम्पॉसिबल और नॉट इकोनॉमिकली वायबल, बट अगर खोल लिया भी तो ही इज द सेम ओनर नाउ एंड इफ ही ऑफर द सेम सर्विसेज ही हैज टू गो फॉर द सेम प्राइस. ही शुड चार्ज 130 फॉर दोज वांटिंग टू जंप ऑफ द क्यू. ऐसा भी नहीं हो सकता. तो फिर व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स? तो तुम बोलोगे लाइन के आगे आने के लिए ज्यादा पैसा दो, फिर सब बोलेंगे हम ज्यादा पैसा देंगे, इट विल बी chaotic. नॉट, दैट्स नॉट हाउ यू हैंडल कस्टमर्स. He should charge 115 for a service to a particular customer and give the next service free. फिर तो उसका घाटा हो गया. ये अभी प्राइस बढ़ाने के लिए सोच रहा है. अगर एक को 115 देके नेक्स्ट फ्री कर दिया तो 2 सर्विस मिला फॉर द प्राइस ऑफ 1.
तो एवरेज 60s पे आ गया, तो इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज हिज रेवेन्यू। ही शुड ओपन ए शॉप 2 hours बिफोर अदर्स एंड, तो ये तो फिर छिप के काम करने जैसे हुआ। तो ऑप्शन ए मेक्स मोर सेंस, क्योंकि वर्बल अग्रीमेंट हुआ था दैट हेयर कट हो, शेविंग हो या हेयर डाई हो, अपना ये प्राइस है। तो ये क्या करेगा, ही विल इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पेशलाइज्ड सर्विस, तो ही इज नॉट वायलेटिंग दैट मच। वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, हमने जो अग्री किया था हेयर कट, शेव एंड हेयर डाई में, मैं वही प्राइस ही ले रहा हूँ, दिस सम न्यू सर्विस दैट आई एम एडिंग, तो उसका मैं अलग प्राइसिंग कर रहा हूँ एट 130। ओके, दैट इज व्हाट कमल कैन डू, ही शुड ऐड अ न्यू एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। तो अग्रीमेंट तो वायलेट हुआ, बट इट्स लाइक फाइंडिंग आउट द लूप होल इन द वर्बल अग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग, so that वो बोल भी नहीं सकते ये वायलेट किया, because he is also agreeing to them yet introducing a new service which will also help him increase his revenue. Okay, hope this makes sense. इसका आंसर क्या होगा बताओ? Hope all of you got a chance to read this. Now Vimal, पहला क्वेश्चन था about Kamal. Now this is about Vimal. Now Vimal relies heavily on a bunch of loyal customers. तो विमल का क्लाइंटेल का खासियत है लॉयल्टी, तो रिपीट कस्टमर्स उसके बहुत ज्यादा है। ही इज कंसर्न अबाउट रिटेनिंग देम। अब विमल सोच रहा है यार मेरे पास तो जितने आ रहे थे लॉयल कस्टमर्स थे, तो उनको मैं कुछ खास सर्विस दे रहा होगा या उनके साथ खास रिलेशन रखा होगा, इसीलिए दे आर लॉयल कस्टमर्स। ठीक है, अभी प्राइस तो सबका सेम हो गया, अब मैं इनके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाऊंगा तो हाउ डू आई रिटेन देम? जेन्युइन प्रॉब्लम। So which of the following options should he choose if he does not want to violate the agreement? अब इसका भी अभी टेंशन है कि I'll have to agree to what we have like discussed, and yet how do I retain my loyal customers? So he should charge differential rates for loyal customers. This is biasness. This will not help him in the long run, क्योंकि अगर वो differential rates चार्ज किया तो फिर बाकी लोग कंप्लेन करना स्टार्ट करेंगे एंड फिर वो उसके पास वही लॉयल कस्टमर्स ही रह जाएंगे। He should charge the loyal customers lower, same thing. He should make every third visit free for his loyal customers, again not helping. He should charge all the agreed upon price, तो फिर रिटर्न किया कैसे? He should allow his loyal customers to jump the queue at times, क्योंकि उसका his business is reliant heavily on loyal customers, which means बाकी customers इतना ज़्यादा आते नहीं है। तो द लीस्ट दैट ही कैन डू फॉर हिज लॉयल कस्टमर्स इज जंप द क्यू, मतलब 3-4 लोग वेट कर रहे थे, थोड़ा कभी उनको आगे प्रेफरेंस दे दिया कि आप आ जाओ पहले, आपका कर लेते हैं। समटाइम्स हम हमारे साथ भी होता है व्हेन वी गो टू द शॉप। तो जस्ट दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बट इट्स अबाउट नॉट वायलेटिंग द अग्रीमेंट येट प्रेफरिंग द लाइक लॉयल कस्टमर्स। तो कुछ तो एक बीच का रास्ता करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट द प्लेस योर सेल्फ इन बिमल शूज एंड सोचो तुम क्या करोगे। इन तीनों को भी हाँ बोल दिया है एंड लॉयल कस्टमर्स को मेंटेन भी करना है। मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो बाकी नए कस्टमर्स नहीं आएंगे, एंड इनसे कम लिया तो उनको पता चल जाएगा। व्हाट कैन आई डू टू मेक माई लॉयल कस्टमर्स फील स्पेशल? दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू। समझ रहे हो? ऑल राइट, ट्राई दिस वन नाउ। People attending this live do like the session and let me know the answer of this in the chat section.
What will be the answer of this? First, read the question. I'll wait for 30 seconds. What will be the answer of this? Again, like ethical dilemma. Now, Chatterjee, the MLA of Trikatpur, owes his election success to his close friend and businessman Ghosh. The victory had appeared unlikely for Chatterjee after the arrival of Bhomik, a budding politician with hordes of money. However, his clean image along with Ghosh's money ensured Chatterjee's resounding victory. तो चैटर्जी ऑलमोस्ट हारने वाला था क्योंकि और एक यंग बडिंग पॉलिटिशियन भौमिक आ गया था जिसके पास पैसा भी है बट चैटर्जी का क्लीन इमेज एंड घोष का मनी दोनों क्योंकि इलेक्शन में पैसे भी चाहिए तो दैट हेल्प हिम गेट विक्ट्री तो जीत तो गया आफ्टर द इलेक्शन अभी क्या हो रहा है घोष जो बिजनेसमैन है इज रिक्वेस्टिंग चैटर्जी टू सैंक्शन द लैंड adjoining his फैक्ट्री तो घोष का एक फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री के साथ और एक जगह है तो घोष उसे बोल रहा है कि ये लैंड उसको सैंक्शन कर देने के लिए फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज फैक्ट्री हाउएवर जो लैंड वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सक्यूज मी वाज अ ग्रीन बेल्ट एरिया तो वहां पे लैंड सैंक्शन करना फॉर फैक्ट्री इज नॉट परमिसिबल क्योंकि वहां पे हार्मफुल पोल्यूशन फ्रॉम द फैक्ट्री को रिड्यूस करना है तो अगर ये उसको सैंक्शन कर देता है इट इज वायलेटिंग द पोल्यूशन नॉर्म्स तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर चैटर्जी इन दिस सर्कमस्टांसेस अब चैटर्जी का सिचुएशन थोड़ा सोचो उसे हेल्प भी करना है बट करप्शन भी नहीं करना है घोष ने उसको हेल्प किया था टू विन द इलेक्शन बट नाउ व्हाट घोष इज आस्किंग इज वायलेशन ऑफ द पोल्यूशन नॉर्म्स तो वो क्या करेगा ओके मना भी नहीं कर सकता हाँ भी नहीं कर सकता तो व्हाट शुड ही डू Chatterjee should approve the sale only after Ghosh plants a large number of trees around the factory and the city. ठीक है Chatterjee should oblige Ghosh provided he recruits 20 locals as his employees on the condition that they plant and maintain tree each in their locality. Okay, as Ghosh is paying market rates, Chatterjee should approve the sale with no riders. This cannot be happening because ये pollution angle consider ही नहीं कर रहा है green belt. Chatterjee should approve the sale and ensure that the green belt is shifted. ये तो पूरा corruption हो गया. Chatterjee should unconditionally approve the transfer of the land as a token of gratitude. Again, no. Ghosh helped him as a friend, not to prove anything. Chatterjee doesn't have to do anything to prove his gratitude. So what he can do, A B अपने पास रह गया. A B से A sounds better. Okay. He should approve only after Ghosh plants a large number of trees around the factory and the city, making sure it's not a polluted place or it's still complying to the pollution norms. Okay. सेकेंड केस में क्या हो रहा है वो प्लांटेशन तो कर रहे हैं बट और किसी जगह पे तो जो प्रॉपर ग्रीन बेल्ट जगह था व्हाट अबाउट दैट इज अराउंड द फैक्ट्री एंड द प्रीमाइसेस एंड अराउंड द सिटी ह्यूज प्लांटेशन वो करे उसके बाद जाके वो सैंक्शन करेगा okay although we cannot be sure whether this is the best course of action or not but अपने पास context तो इतना ही है तो उसी को लेके हमें आंसर करना पड़ेगा now let's take a look at this one second one इसका आंसर क्या होगा what will be the answer of this welcome everyone good evening
Now, inspired by Bhaumik's manifesto, Chatterjee is contemplating a green policy which can adversely affect Ghosh's business interests. तो भौमिक मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन के पहले एवरी पॉलिटिकल पार्टी दे रिलीज देयर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दैट इज देयर एजेंडा ऑफ व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 5 years, क्या क्या इश्यूज के ऊपर दे विल बी वर्किंग and what all things they are trying to deliver and what all changes they will, all the promises and everything and their plan. तो वो that is the part of the election manifesto. तो जो भूमिका मैनिफेस्टो में जैसे ग्रीन पॉलिसी, तो चैटर्जी सोच रहे मैं भी एक ग्रीन पॉलिसी करूं, बट जब वो करता है तो वो घोष का बिजनेस इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका प्लान है कि मैं लैंड एक्विजिशन करूं एंड ऑल. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस फ्रॉम घोष इज लाइकली टू कन्विंस चैटर्जी नॉट टू परस्यू द पॉलिसी. ना अभी घोष के जगह पे जाके सोचो, जब तुम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते नहीं नहीं मेरा ये है तो तुम मत करो. तो चैटर्जी का क्लीन इमेज है, तो ही माइट से कि मैं क्यों नहीं करूं, तो मेरे को लोग इसीलिए वोट नहीं किए थे दैट आई विल हेल्प यू, तो दैट विल क्रिएट समथिंग अगली. तो घोष को वेरी केयरफुली एंड टैक्टफुली ही हैज टू से समथिंग, उसका काम भी हो जाए एंड जो चैटर्जी भी कन्विंस हो जाए. तो वो क्या बोले? तो रिक्वेस्ट चैटर्जी टू डेफर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन पॉलिसी बाय 3 years, द टाइम नीडेड टू मेक हिज फैक्ट्री ग्रीन. तो डेफर क्यों करेगा वो? आज नहीं तो कल फिर तो होगा ही. Remind Chatterjee that it is for his clean image that the people voted him and not to copy Bhaumik's green policy. Now this can be an option. वो चैटर्जी को बोले तुम्हें भौमिक को कॉपी करने के लिए कोई जरूरत नहीं है. People have voted you for your clean image, so try and do something from your own mind, not copy him. Warn Chatterjee that all industrialists, तो ये तो threatening हो गया, तो ये extreme, that is why we'll ignore this. Appeal to Chatterjee's sympathy citing potential loss his business, तो ये भी अगेन अ लिटिल एक्सट्रीम हो जाएगा. थ्रेटन चैटर्जी दैट ही शुड नॉट, थ्रेट वर्ड आते ही यू कैन इग्नोर. तो दिस इज द बेस्ट टैक्टफुल लाइक हैंडलिंग ऑफ दिस सिचुएशन. तो वो भौमिक को डायरेक्टली नहीं, तो वो इनडायरेक्टली उसको बोलेगा कि यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, नो नीड टू कॉपी भौमिक. ठीक है. मनीषा क्या पूछ रहे हो? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स एवरी ईयर सेम रहता है या क्या चेंजेस होते हैं? आई डोंट हैव लाइक वेरी डीप नॉलेज ऑन दिस क्वेश्चन, मतलब इतना मैं ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया हूँ, बट मोर और लेस क्या होता है इन दिस प्रोग्राम्स, द करिकुलम इज मोर 70% फिक्स्ड. ठीक है, वही बेसिक्स पढ़ेंगे जो बिजनेस का बेसिक्स है, अकाउंटिंग हो गया एंड मार्केटिंग बेसिक्स हो गया, फाइनेंस बेसिक्स, ये तो पढ़ोगे. इवन इफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल मे बी, हाँ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स लेटर ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ द कोर्स में थोड़े बहुत अलग आएंगे. एंड बिकॉज इट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन ओरिएंटेड, तो लाइव केस एग्जाम्पल्स एंड ऑल वो सब चेंज हो जाएंगे. थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएगा ज़्यादा एंड ऑल, तो वो सब थोड़ा चेंज होगा. बट आई डोंट थिंक एवरी ईयर कोर्स सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा होगा मनीषा, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर. तो थोड़ा चेक कर लेना उनका, जो भी कॉलेज का तुम ये प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो, तो जस्ट चेक उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर में जाके उनका वेबसाइट, विजिट द वेबसाइट, लुक एट द कोर्स स्ट्रक्चर क्या कैसा रहता है. ऑल राइट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. चलो लेट्स ट्राई दिस. What is given here? The city of Yasmand is served by licensed taxis operating on officially sanctioned meter rates and driven by licensed drivers who do not own taxis but pay a monthly rent to the taxi owners. Shailesh Nair, the mayor of Yasmand, perceived that most of these taxis do not offer sufficient comfort and safety to the passengers. The mayor wants the owners and drivers to care about comfort. Which of the following decisions, if taken, is most likely to increase the comfort levels of passengers? The mayor issues a guideline that taxis will be randomly inspected by the police for the comfort level. मोस्ट लाइकली नहीं होगा, धीरे धीरे वो वार्निंग होगा, पनिशमेंट होगा, फाइन होगा एंड देन मे बी एट सम पॉइंट वो करेंगे. The mayor ensures banks grant drivers loans to own cars
ओनर ड्रिवन कार्स जनरली ऑफर ग्रेटर कंफर्ट, वैसे नहीं है यहाँ पे, उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो लिखा नहीं है, तो वी कैन नॉट अज्यूम, ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। मे भी होता होगा, बट ऐसा नहीं कि जो लाइसेंस ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं उसमें कंफर्ट होता नहीं है। मे बी दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट पार्ट। तो क्या करने से अटेंशन देंगे, वो प्रॉब्लम है। The mayor introduces licensing of air conditioned taxis which can charge increased rates to rich customers. So this is only about rich customers. What about others? Do they not deserve comfort? Mayor introduces a feedback system that records passenger satisfaction with comfort levels. This will affect the renewal of annual taxi license. Now this is clever. वो क्या करेगा, एक फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो जो लोग सेटिस्फाई होकर जाएंगे वो अच्छा फीडबैक देंगे, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक, if that feedback will some way give a discount or some way it will be factoring in while next year उन लोगों का टैक्सी लाइसेंस रिन्यू हो रहा है, so they will take this seriously. So this will make sure that they are looking after the comfort and safety parameters. Mayor permits doubling meter rates. तो पैसा बढ़ाने में फिर customers will be unhappy. तो but this is perfectly making sense. D. समझो, sometimes you will have to be very clever in your decision making. तो ऐसे यहाँ पे मेयर क्या कर रहा है, मेयर इज थिंकिंग अबाउट द टैक्सी ओनर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स, ही इज आल्सो थिंकिंग अबाउट द कस्टमर्स, इज आल्सो थिंकिंग अबाउट कंफर्ट एंड सेफ्टी, आल्सो थिंकिंग अबाउट द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो क्या ऐसा करे सो दैट बहुत ज्यादा चेंज भी ना हो, बट वो जो चेंज चाह रहा है वो भी हो जाए। ऑलराइट, ट्राई दिस वन। इसमें क्या आना चाहिए आंसर? Which of the options below is most likely to convince the owners? ठीक है, taxi owners. The taxi owners who clear comfort inspection can charge higher rentals from the drivers, and the drivers with impeccable safety record can charge the same from customers. फिर what about the customers now? उनका तो पैसा बढ़ता गया। The taxis that clear comfort inspection can charge 25% above the meter rates. Studies have shown that customers are willing to pay around 18% extra for comfort. वो 18% एक्स्ट्रा देंगे, बट ये 25% above metered rates. This is not something that the customers will be very happy about. If a taxi owner has a consistent record of comfort and safety, the government will subsidize a second loan. But उन्हें अभी लोन चाहिए नहीं चाहिए, we don't know. Taxis can charge 25% more if they clear comfort inspection. However, the owners of the taxis found compromising on safety will be jailed. Taxis that pass comfort inspection test can charge 25% more. Should they violate any traffic rule, this privilege will be withdrawn. Okay, so यहाँ पे somehow they are emphasizing on this 25% more. So let us say for like argument sake हम assume कर लेते हैं customers 25% देने के लिए राजी हैं. Which is the option that I should go for? I have 25% more in option B, then option D and option E also. ये सेकंड लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब टैक्सी ओनर्स को लोन चाहिए, हमें कैसा अज्यूम कर सकते हैं, एंड इट विल बेनिफिट देम। टैक्सी ओनर्स के लिए क्या बेनिफिट है वो देखना है। ऑप्शन ए विल क्लियरली विल कट इट डाउन बिकॉज देयर इज नो एंड टू हाउ मच दे कैन चार्ज एक्स्ट्रा। तो ओनर ड्राइवर से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ड्राइवर कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, एंड इट कैन बी एन एंडलेस प्रोसेस। तो व्हाट इफ वो 50% 100% मोर चार्ज किए, तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो ए तो रिजेक्टेड, बी सी भी रिजेक्टेड है, बी डी ई। अब और एक बार इसको देखते हैं। बी, द टैक्सीज दैट क्लियर कंफर्ट इंस्पेक्शन कैन चार्ज 25% above metered rates. Studies have shown that customers are willing to pay around 18% extra for comfort. तो ठीक है, 25% मोर देन मीटर्ड रेट्स अगर लेंगे तो ओनर्स के लिए ज्यादा वैसे कुछ लिखा नहीं है, बट दिस इज काइंड ऑफ ओके अभी के लिए। Taxis charge 25% more if they clear comfort inspection. However, owners of the taxis found compromising on safety will be jailed. Taxis that pass comfort inspection test can charge 25% more. Should they violate any traffic rule, this privilege will be withdrawn. So I think owners के लिए B sounds like a better option. ठीक है, ये jailed वगैरह थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है उनको बोलने के लिए। अगर ओनर्स देखेंगे कि हाँ आप कस्टमर्स 25% तक पे करने के लिए राजी हैं,
तो 25% तक वो चार्ज कर सकते हैं। ओके, एंड उसमें क्या होगा, क्योंकि कस्टमर्स 18% एक्स्ट्रा देने के लिए राजी है। मतलब हाउ विल यू कन्विंस द ओनर्स दैट दे फोकस ऑन सेफ्टी? उनको धमका के तो बोलोगे नहीं कि जेल हो जाएगा, तो उनको ऐसे मोटिवेट करें कि यू कैन चार्ज हायर, कस्टमर्स आर विलिंग टू पे 18% हाई फॉर कंफर्ट, तो व्हाई नॉट लुक एट द कंफर्ट एस्पेक्ट एंड यू कैन आल्सो चार्ज हायर, तो देन दे कैन बी कन्विंस्ड। वैसा कुछ एक्सट्रीम लिखा नहीं है सो दैट हमें उनको धमकाना पड़े दैट ओके नहीं तुम्हारा लाइसेंस विथड्रॉ हो जाएगा या यू विल बी जेल्ड एंड ऑल, तो वो थोड़ा लिटिल बिट एक्सट्रीम हो रहा है, तो मे बी आई विल गो विथ ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? ऑल राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू रीड दिस, पहले ट्राई एंड रीड दिस, क्या दिया है। पीपल अटेंडिंग लाइव, एक बार सेशन को लाइक कर दो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द कैटलिस्ट चैनल। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इज अ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बॉडी टू प्रमोट रिसर्च। In addition to helping in policy making, it also provides free online access to all the articles to the public. ठीक है? It has a mission of publishing high quality research articles. Till 2010, the publication of articles was very slow because there was no incentive for researchers to publish. Researchers stuck to the mandatory one article a year. Most of the researchers engaged in offering consultancy and earned extra income. Since its inception, the institute was considered the best place for cutting edge research. The new director of the institute was not happy with the work done by the researchers in silos. Silos means अकेले अकेले काम कर रहे होंगे अपना अपना, and came out with a new research policy in 2013 to increase research output and improve collaboration among the researchers. It was decided that extra benefits would be offered to researchers with new publications. As a result, the number of research articles increased fourfold. तो जितने रिसर्च आर्टिकल्स बढ़ रहे थे, जैसे ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आ गया स्कीम, तो 4 टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स। So at the 2015 annual audit, an objection was raised against the new benefit scheme. Auditors were not happy with the increased expenses towards the remuneration of the researchers. Further, the government opined, मतलब उनका opinion ये था that the publication was itself a reward and hence researchers need not be paid anything extra. तो गवर्नमेंट का सोचना है कि जब किसी का रिसर्च हम पब्लिश कर रहे हैं, that in itself is a reward. So we don't do not have to like remunerate them in terms of money. So the director tried to defend his policy, but the response from the government was not encouraging. Auditor's role is to verify accounts. ये है context. Let us see the question. What can be the answer to this? Question देखते हैं क्या दिया है. The following facts were observed by an analytics team hired by the government to study the extant situation. There was a fourfold increase in the number of researchers leaving the organization in 2014. A researcher died while on duty. Quality of articles published declined substantially. Average number of people accessing the article decreased by 2%. Now, which one of the following options would justify the government's intention to discontinue the scheme? तो गवर्नमेंट क्या चाहता है? डिसकंटिन्यू करो। सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि आर्टिकल्स का क्वालिटी हैज डिक्लाइंड बिकॉज तुम उनको
एनकरेज कर रहे हो, ज्यादा पब्लिश करेंगे तो ज्यादा पैसा है, तो वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अब 3 के साथ मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? 2, a researcher died, that researcher could have died for various other reasons, so this is not possible। तो जहाँ पे 2 है वो तो गया। 3 के साथ 4 हो सकता है। The average number of people assessing an article decreased by 2%, but that is not necessarily because the number of articles have gone up या उनका इंसेंटिव मैकेनिज्म की वजह से, इट कुड बी फॉर एनी अदर रीजन ऑल्सो। तो 3 क्लियरली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। क्वालिटी डाउन हो रहा है भाई, तो उठाओ उसको स्कीम, ये काम नहीं कर रहा है। रिसर्च का हाई क्वालिटी रिसर्च इज आवर मोटो, तो अगर उस पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, स्टॉप द स्कीम इमीडिएटली। ओके, लेट अस सी दिस। The director still wanted to persuade the government to review its stand. He had framed the following arguments. क्या आर्ग्यूमेंट है उसके? मोस्ट फेमस रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो हाईएस्ट पेड, तो हमें हाई पे करना चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गिव्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू द साइंटिस्ट, तो हमें भी देना चाहिए। मतलब उसका आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है, ठीक है। दिस ईयर्स हाईएस्ट पेड रिसर्चर हैड won the Nobel Prize last year. Considering the government to be reasonable, which of the following options is unlikely to convince the government? I think all three. गवर्नमेंट इसीलिए तो नहीं मानेगा कि सब हाईएस्ट पेड फेमस रिसर्चर्स आर हाईएस्ट पेड, तो हाउ डज इट अफेक्ट द क्वालिटी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट वो दे रहा है तो हम उतना देंगे, नॉट नेसेसरी। एंड इट्स टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट। दिस ईयर्स हाईएस्ट पेड रिसर्चर हैड won the Nobel Prize last year, so he didn't win the Nobel Prize because he was highest paid. So all three are unlikely to convince the government. The director wanted to promote good decision making at Indian Institute of Research. A few trusted colleagues offered the following suggestions. उसको कौन सा सजेशन लेना चाहिए? Auditors need not be allowed to object to extra benefit scheme. Auditors need not pinpoint sudden increase in expenditure. ये auditors कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सा स्कीम क्या करना चाहिए, पॉलिसी क्या होना चाहिए, ऑडिटर का वो काम नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ऑडिटर्स रोल इज टू वेरीफाई अकाउंट्स, सो दे विल नॉट बी इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। Which of the following combination of options should the director agree the most with? 1 and 3. They need not be allowed to object to any extra benefit scheme. Also, they need not be consulted before taking any policy level decision, because वो उनका रोल जॉब डिस्क्रिप्शन पे आता ही नहीं। तो 1 and 3, बट 2 ठीक है, बिकॉज दे आर वेरीफाइंग द अकाउंट, सो दे मे पिन पॉइंट कि हाँ इसीलिए आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है, वहां पे बढ़ रहा है, बट आप ये करो नहीं करो वो नहीं बोल सकते। मेकिंग सेंस? तो ऐसे करके डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज द सेकंड मैराथन, देयर विल बी 1 or 2 more marathons on this. So I'll be discussing different types of questions जो previous year में आए हैं, तो we'll get into the psyche of the examiner कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। I'll again say there is no right decision, no wrong decision, but हाँ, there is a way of answering such questions. So I have mentioned these key points. You keep this in mind when you are taking any question and making any decision. These points should be kept in mind. Okay. So stick to these parameters when you are like solving questions. Solve mocks, give more and more mocks. देखो कहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, try and relate to what framework we are discussing in the class. If you still get any doubts, do feel free to reach out. So that is it from my end for this session. We'll meet again in the next session. Just a quick announcement, Zero to Zenith batch January 5 को start हो रहा है, and you can join this batch. अभी एक 23% discount चल रहा है for CAT 2023, so you can use my code and join this batch. And ये इनविंसिबल बैच कैट 2023 के लिए, इसको भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है December 2023। दिस इज द ऑफर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, 23% ऑफ चल रहा है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, प्लस हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, यू कैन टेक and then start attending the classes. So thank you all for joining. Hope you guys like the class. Do like the session, subscribe to our channel, and we'll meet again in another session.
You can get my profile link and start attending classes on the Unacademy platform for free, and the link is mentioned in the description of the video. So we'll meet again in the next session. Till then, keep studying and have a nice day. Good night.